Okay, students, a very good morning and welcome back to class 12th physics lecture on topic electromagnetic induction. Electromagnetic induction से ही हम लोग proceed कर रहे थे, तो आज electromagnetic induction को ही आगे बढ़ा के चलते हैं. Today we will study a new topic on electromagnetic induction, and today we will study about motional E.M.F. Today we will study about motional E.M.F. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है इन बोर्ड एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की द क्वेश्चन दैट हैज कम इज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एज द टर्म स्टेट्स मोशनल ईएमएफ, द ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, हाउ दोस कंडीशंस आर फॉलो, when will you, how will you check कि whether there will be an EMF or not generated within the conductor. तो पहले तो बेसिक बात करते हैं कि EMF जनरेट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे हो रहा है. ओके, सो लेट्स गो अहेड विद केस 1. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद केस 1 एंड स्टडी द फीचर्स. नाउ सपोज there is a magnetic field which is going inside the plane of the board. The magnetic field is inside the plane of the board as visible to all of you. बराबर. अब assume that in this magnetic field we have a conductor. We have a conductor of length L, which is being moved in this particular direction with a velocity v. With a velocity v. तो सबसे पहली चीज, the very first thing that you need to note over here, मैं हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार बना के लिख रहा हूं, that magnetic field B, length L and velocity vector v are mutually perpendicular, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. देखो, लेंथ वेक्टर ऊपर की ओर, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में. ठीक है, ये देखो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर बना देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक, velocity vector ये वाला and length vector all are mutually perpendicular in this particular case that we are taking. ठीक. Now when you will move this conductor, तो conductor की बात कर रहे हैं. conductor has free electrons. एक एक पॉइंट को गौर से समझना. Conductor has free electrons. Okay, that means there are charged particles, or I can say there is a set of charged particles which is moving in magnetic field perpendicularly. There is a set of charged particles which is moving in magnetic field perpendicularly. Okay, what happens when a charged particle enters a magnetic field perpendicularly? Higher. What happens when a charged particle enters a magnetic field? और खास तौर पे परपेंडिकुलरली, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल विल एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड? वेरी गुड अमन. फोर्स एक्ट्स ऑन इट. उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका मैक्रोस्कोपिक व्यू बना लेता हूं. किसका? केवल रॉड का एक मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स हैव, और इसमें एक काम करते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर लेते हैं व्हिच इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी भी तो इस डायरेक्शन में. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में. नाउ लेट अस फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल. इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर एक्ट कर रहा होगा? तो यू हैव डिफरेंट रूल्स. यू हैव लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, ऑल्सो यू हैव राइट हैंड पाम रूल. तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है?
राइट हैंड पाम रूल कहता है कि प्लेस द फिंगर्स, ठीक है, इसको फिंगर्स जो पाम राइट हैंड पाम की फिंगर्स है, प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, yes, place the thumb in the direction of the motion of the particle. कौन सा पार्टिकल? पॉजिटिव। कौन सा पार्टिकल? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा था? इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? इस डायरेक्शन में। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, दैट मींस द फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स, फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स। Is it clear to all of you? If you want, you can also use Fleming's left hand rule. छोटा बच्चा, mother, father. ठीक है, तो छोटा बच्चा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? इधर फ्लो कर रहा होगा करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये वाला, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, इनसाइड। तो थंब किधर आ रहा है? फोर्स किधर आ रहा है? डाउनवर्ड्स आ रहा है। That means this charged particle will be experiencing a force in the downward direction. In the downward direction. मैं इसको लिख देता हूँ Fm. That is magnetic force. That is magnetic force. यहाँ तक clear है? Is it clear up till here to all of you? Yes, please. Is this part clear up till here? Quick, quick, quick. जल्दी करो भाई. Is this part very much clear up till here? ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो, now all the electrons will start having a force, उन सबके ऊपर एक फोर्स लगता जाएगा due to magnetic field, and when this force will act on these charged particles, on these electrons, slowly and slowly, slowly and slowly, in due course of time, in some time या after some time, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, after sometime the electrons accumulate at the bottom of the rod. ठीक है, क्या होगा? बॉटम ऑफ द रॉड में इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिव चार्ज विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। ठीक है, अगर यहां नेगेटिव चार्ज आया है, अगर यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट किए, दैट मींस ऑपोजिट एंड पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव एंड पे, अपोजिट एंड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ व्हेन नेगेटिव चार्जेस स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ओवर हियर, positive charges start accumulating over here, that means there will be a generation of electric field. There will be a generation of electric field. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी तो what will happen? Now, as the electric field will start generating, what will happen? This will also apply a force on the electrons. Now, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उन पे फोर्स लगाएगी। एक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लगा रही है इधर, ठीक है, एक फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लगा रही है इलेक्ट्रॉन पे। बट नाउ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हैज बीन जनरेटेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे फोर्स लगाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पार्टिकल पे किधर फोर्स लगाती है? ऑपोजिट डायरेक्शन, अपनी फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगाती है। दैट मींस an electrostatic force Fe will be acting upon the electron in the upward direction. ठीक है, in the upward direction. ठीक है, तो what happens? Charges या electrons keep accumulating at the bottom up till the time Fm is greater than Fe। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से ज्यादा है, up till that time इसको कैपिटल E कर देते हैं। ठीक है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स
इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से ज्यादा है, the electrons will keep accumulating. But slowly and slowly the electric field goes on increasing, क्योंकि accumulating charge particle बढ़ते जा रहे हैं. That means force due to electric field will also keep on increasing. And after some time, force due to electric field becomes equals to force due to magnetic field. मैंने mod इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है. And we are talking about the magnitude. तो ये तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का फोर्स इक्वल ना हो जाए. ठीक है ना? What is the expression for force on a charged particle in electric field? जल्दी बताओ. What is the force on a charged particle due to electric field? Hurry up. What is? Very good. अमन नो QV नहीं होगा बेटा, QE होगा. अमन FE is not QV, it is QE. Very good साक्षी. तो FE can be written as QE और Q किसकी बात कर रहा है? हम यहाँ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. So I can write it as E into E. बराबर. What is the expression for magnetic field on a force acting on a charged particle in magnetic field? What is the expression for force acting on a charged particle in magnetic field? Magnetic field, electric field का तो सबने लिख दिया, Q into capital E या E into E. What is the force on a charged particle? Very good. QVB sin theta या EVB sin theta. यहाँ पे EVB sin theta लिख लेते हैं. V is the velocity over here, छोटा v कर देता हूँ. EVB sin theta. ठीक है. What is the angle theta over here? Theta is the angle between velocity vector और magnetic field vector. तो ये रहा velocity vector, ये रहा magnetic field vector. दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. ठीक है. velocity vector इधर है, magnetic field vector अंदर की तरफ. So angle is 90 degree. So I can say E और E cancel कर देते हैं. तो I will have E is equals to VB sin 90. Sin 90 is 1, so we get E is equals to VB. ठीक है? This is the final electric field. When final electric field, this I can say as the final electric field at equilibrium. At equilibrium. जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, क्योंकि इसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं हो रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ रही है. सो दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज VB. अब देखो यहां तो मिल गई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड VB. ठीक है, इसको रब कर लेते हैं. सो आई गेट फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एज VB. एक्सप्रेशन 1 को फिर से लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to V. This is the first part that we did. Now, what is the expression for potential difference due to the electric field? What is the expression for potential difference due to the electric field? Delta V, capital V, is equals to E multiplied by L. E electric field into length. बराबर. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ होता है ना भाई, E into L. और E कितना है अपना? VB. So therefore delta V is equals to VBL. और in short क्या इसी को लिखने का दूसरा तरीका है BVL, BLV या BVL. This is the potential difference that is generated when a conductor is moved in a magnetic field with velocity V and VB and L all are mutually perpendicular to each other. तो यहां से बात क्लियर होती है कि अगर किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो an EMF is generated. इसी को हम EMF E की तरह लिख सकते हैं VL. So from here we get a scenario where here we get a proof
that if a conductor is moved in a magnetic field, there will be an EMF that will be generated. ठीक है, this starts acting as a battery. इसके टर्मिनल्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा. Is it clear to all of you? Yes, please. अभी इसी को देखने के और भी कई तरीके हैं. Is this part very much clear to all? हाँ भाई, समझ में तो मेन चीज ये थी कि कैसे आएगा. अभी क्या है कि डायरेक्टली आपको बता दिया था कि मूव करेंगे तो इसमें एक EMF जनरेट होगा, बट कैसे जनरेट होगा, you can see there are other ways also of visualizing this, but this is the most basic कि how an EMF is generated. ठीक है, चल अब इसी का एक अगला फॉर्म देखते हैं. ठीक है, इसी का एक अगला फॉर्म देखते हैं, ध्यान से देख. ठीक है, now let's have a case two. ठीक है, ये डिफरेंट वेज है जिसमें आप सेम प्रोसीजर को स्टडी करते हो. Now in second case what we do, we assume, ठीक है, हम एक रेल अज्यूम करते हैं. रेल से मतलब क्या है, तुमको समझ में आ जाएगा. Just assuming a rail, and let us have a rod of length L. Let us have a rod of length L, which is free to slide on this rail. Which is free to slide on this rail. और इसको हम इधर वेलोसिटी v से स्लाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये एक रेल सिस्टम है जिसमें रॉड L है, कंडक्टर है, और ये कंडक्टर को हम इसमें स्लाइड कर रहे हैं. इसमें हम स्लाइड कर रहे हैं. Now, if you see, once you start sliding the rod, तो बेटा क्या होगा, ये एक लूप दिख रहा है, ये एक लूप दिख रहा है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है. ठीक, as you increase or move this rail, move this rod, the area enclosed in the loop keeps on changing. The area enclosed in the loop will change. If the area will change, magnetic flux linked with this loop will change, linked with this rod will also change. That means there will again be a change of magnetic flux, and if there is a change in magnetic flux, there will be an induced EMF. फिर तो खेल समझो, यहाँ पे रॉड तुमने लिया, ये रॉड को तुमने मूव किया, ये रॉड को तुमने मूव किया, तो ये जो एनक्लोज्ड एरिया था ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो यहाँ पे भी एरिया चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. दैट मींस देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, सो नाउ लेट अस से the rod moves a distance dx in some time dt. ठीक, एक छोटे टाइम dt में सपोज ये डिस्टेंस dx चलता है, मतलब ये रॉड सपोज यहां पे आ जाती है. ठीक है, ये रॉड सपोज यहां पे आ जाती है, दैट इज अ डिस्टेंस dx. It moves a distance dx in some time dt. Now what can you say about the change in area? जो डिफरेंशियल एरिया ये जो आया है, ये एरिया जो ये चला है dt टाइम, तो I can say area is what, length into breadth. So I can say dA is nothing but L multiplied by dx. Let me have this as equation 1. dA is nothing but L into dx. अच्छा, phi क्या था? phi is b a cos of theta. b dot a होता है ना, b a cos theta. What is the angle over here? जल्दी बताओ, what is the angle theta over here? एरिया वेक्टर, ये एरिया ले रहे हैं, छोटा एरिया ना. What is the angle theta between a and b? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा कितना है? Quick.
What is the angle between area vector and magnetic field vector in this particular case? Very good, Aman. It is 0 degrees. 0 degree cos 0 1 हो जाएगा. So I can say phi is equals to B A cos of 0 which is 1. Therefore flux phi is equals to B A. ठीक है? Let me have this as equation. Clear? So now it is the term. अब area change हो रहा है, flux change हो रहा था, magnetic flux change होगा, but of course एक induced EMF आएगा. That means यहाँ पे induced EMF A है, which phi है, which is now the induced EMF E. Magnetic flux change phi है. So induced EMF E, which is given as mod of d phi by dt. बराबर? So I can say over here, this can be written as mod of d. Phi कितना है? dA by dt. ठीक है? Now, if you see, magnetic field in this particular case is a constant. Magnetic field तो vary नहीं कर रही है, area vary कर रहा है. तो I can say this is equals to B. ठीक है? Mod of dA by dt. Mod of dA by dt. ठीक है भैया? Yes? अच्छा dA कितना है अपना LDX? dA कितना है LDX from equation number 1 as dA is equals to L dx. So therefore EMF E can be written as D times L, sorry, तो dA की वैल्यू आ गई है D multiplied by L dx by dt, और I can say E is equals to D L into dx by dt. Now what is dx by dt? What is dx by dt? Yes, please. What is dx by dt? जल्दी बताओ. What is dx by dt? Very good. Velocity. Dx by dt is velocity. So as dx by dt is velocity v, so I have therefore EMF E given as BLV. The same expression that you got in case 1 for induced EMF E. The same expression that you got in case 1, E is equals to BLV. देखने का नजरिया अलग था. वहां तुमने बेसिकली समझा कि EMF E आ कहां से था. यहां पे समझने का दूसरा तरीका कि एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज से EMF E आ रहा है. Ultimately, what is the last conclusion? That if a conductor is moved in a magnetic field, if there is a motion of a conductor in magnetic field, then there will be an induced E.M.F. Is it clear to all the students? हाँ भाई, समझ में आ गया है? Students, is it clear to all? ठीक है, चलो. तो ये तो वो वाले केसेस थे when we were talking कि E, V and B are mutually perpendicular to each other. When we were talking कि E, V and B are mutually perpendicular to each other. Now, what would happen if they are not mutually perpendicular? अगर वो mutually perpendicular नहीं है, तो क्या होगा? So what is going to happen in that particular case? So I can term this case as the most generalized case for any situation. The most generalized case for any situation. ठीक है, ये तो केवल इसलिए बताया था आपको so that you get a clear idea कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो एक मोशनल EMF जनरेट होगा, एक EMF उस कंडक्टर में जनरेट हो जाएगा. ठीक है, and if you close the circuit, current will start. चलो, let's have a case where magnetic field is there. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है. We have a conductor which is placed in such a way so as to make angle theta
द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है रॉड, अभी ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर लेंथ वेक्टर नहीं है, लेंथ वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। एंड assume that this is being moved with a velocity v in this direction, और ये ऐसे मूव किया जाता है, ये इस टाइप से मूव किया जा रहा है, एंड लेट दिस पर्टिकुलर एंगल बी बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी जो लेना हो वो ले लो, ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया जाता है। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, ईएमएफ जनरेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा, तो ये जनरलाइज्ड वर्जन है जो अब आप देखने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मेजर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज द मेजर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, क्विक, व्हाट इज द मेजर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जल्दी बताओ भाई। यस, वेरी गुड, Fe equals to Fm, Fe equals to Fm, बट यहां पे हम मॉड का कंसिडरेशन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको मालूम नहीं, पूरा केस मालूम नहीं, बट हमें ये मालूम है कि these two forces should be equal and opposite, these two forces should be equal and opposite, ठीक है, तो for equilibrium Fe should be equals to Fm। अब Fe क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E is equals to minus of E V cross B, याद है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, QVB sin थीटा या QV cross B, यस, E is equals to minus E V cross B, बराबर, यस, so from here what I get, E and E gets cancelled, so I get vector E given as minus of vector V cross vector B, ठीक है, यस, ठीक, तो ये हमको मिल गया एक पार्ट नंबर 1। Now what is the relation between electric field vector in terms of potential, याद करो, what is the relation of electric field vector in terms of potential, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ जल्दी, what is the relation of electric field vector in terms of potential, एक और हिंट देते हैं, with length, चलो क्विक, जल्दी बताओ भाई, वेरी गुड, dv is equals to minus E dot dl, dv is equals to minus E dot dl, याद है ना सबको, तो dv as dv is equals to minus of vector E dot dl, ठीक है, अच्छा, E कितना आया है अपना, माइनस ऑफ V क्रॉस B, हाँ प्रियांशु वेरी गुड, ये dv by dx होगा माइनस dv by dx होगा, याद है प्रियांशु, Ex इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x एक्सिस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv by dx, माइनस dv वेक्टर by dx, याद रखना, ठीक है, माइनस लगता है साइन, तो as dv is equals to minus E dot dl, तो यहां पे मैं इसको प्लेस करूं, एंड as vector E is equals to minus of vector V cross vector B, so therefore dv is equals, तो E की वैल्यू यहां प्लेस कर दी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो we will have V cross B dot dl, क्वाइट क्लियर, बट हमें dv नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V, हमें चाहिए V, ठीक है, हमें क्या चाहिए, V चाहिए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, on integrating both sides, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो आई गेट इंटीग्रल dv, ठीक है, द इनिशियल पोटेंशियल vi, so final potential vf is equals to integral v cross b dot dl,
डॉट डी। ठीक, ये क्लियर हो चुका है, तो यहां से रब कर लेते हैं एंड लेट्स प्रोसीड अहेड। What is the final expression that I have got is integral v initial v final dv, which is equals to integral v cross d dot dv। ठीक है, अब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिला, v लिमिट्स v initial to v final which is equals to v cross v। अब velocity और मैग्नेटिक फील्ड have been assumed to be constant, वेरिएबल नहीं है। velocity and magnetic field have been assumed to be constant, they are not changing। तो v cross v को मैं बाहर ले लेता हूं, v cross v integral of dl which will be l, this becomes v cross v dot l। now v final minus v initial क्या बनेगा, डेल्टा v, which can be written as E.M.F E, which will be given by v cross of b into dot of l, into dot of l, and this expression of motional E.M.F is termed as the generalized expression। इसको हम बोलते हैं generalized expression which is applicable for all the cases, which is applicable for all the cases। अभी करके दिखाते हैं। This is the generalized expression which is applicable for all the cases। ठीक है, is this part very much clear to all of you? ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हो, वी आर गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन। कैसे एक्सप्रेशन आई समझ में आ गया तुमको, E is equals to V cross B vector V cross vector B dot L। Is it clear to all of you? Yes? अभी इसको यूज करके भी दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब इसके खेल एप्लीकेशन इसका बोर्ड में और कंपटीशन में कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स, जो अभी तक हमने केसेस किए थे, अब जरा ये एक्सप्रेशन यूज करके उसको वेरीफाई करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको ईएमएफ की एक्सप्रेशन क्या मिली है, हमें ईएमएफ की एक्सप्रेशन मिली है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l। ठीक है, अब जरा यूज करके इसको देखते हैं जो केसेस हमने किए थे कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। ओके, चलो ये 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 इधर इधर इधर, ये आ गई रॉड ऑफ लेंथ L, लेंथ L है रॉड की, which is moving in this direction with velocity, asking you to find the EMF, induced EMF in this case when it is in motion। तो सबसे पहला काम V क्रॉस B, सबसे पहला काम V क्रॉस B। जरा V क्रॉस B करके बताओ what is the direction of V क्रॉस B, what is the direction of V क्रॉस B? Hurry up, what is the direction of V क्रॉस B? What is the direction of V cross B? Quick! What is the direction of V cross B? निकल रहा है। Very good अमन। It is upward। ठीक है, तो V cross B का डायरेक्शन मिल गया हमको upward। ठीक है, this is the direction of vector V cross vector B। ठीक है, okay, so now EMF E which would be given as V cross B क्या हो जाएगा, V B sin of theta dot, ये पूरा वेक्टर जो आएगा डॉट वेक्टर L। तो V B sin theta, what is the angle between velocity vector V and magnetic field B? velocity vector V ऐसे है, magnetic field B अंदर है। ठीक है, velocity vector V और magnetic field B दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्लियर दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मींस थीटा इज 90 डिग्री। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin 90 V B sin 90
डॉट एल वेक्टर, साइन 90 is 1, तो E is equals to VB डॉट L। तो V क्रॉस B का एंगल कितना आएगा यार, ठीक है, L, L के साथ डॉट प्रोडक्ट है, L किधर है, L किधर है, L भी ऊपर की ओर है, L भी ऊपर की ओर है, तो व्हाट इज द एंगल, तो अब ये क्या बनेगा, दिस विल बी फॉर्म्ड एज E is equals to V B L cos of theta, डॉट प्रोडक्ट लगाता है V B L cos of theta, what is the value of angle theta over here, very good Aman, that is 0 degree, so as theta is equals to 0 degree cos 0 हो जाएगा 1, हमें क्या मिलेगी एक्सप्रेशन E is equals to B B L, you got the same expression, you got the same expression, ठीक है, clear है, is this clear to all of you now, कि जनरलाइज्ड केस से कैसे पता लगा कि हाँ भाई ये हर केस जनरलाइज्ड केस विल बी एप्लीकेबल ईच एंड एवरीवेयर, ठीक है, तो अब इसका एक और केस देख लें, ठीक है, अब इसका एक और केस देख लेंगे, लेट अस सी ये सब जगह एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है, चलो, तो वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, अब ये हमें टाइम आपको देंगे, and you have to find out this is magnetic field B. Find out the induced EMF E in this case using the generalized expression. Find the EMF E, expression for EMF E in the case using the generalized expression. What is the induced EMF E? Quick. Aman says 0. Okay, anybody else? I'm still waiting for the response. Anish also says 0. Priyanju also says 0. Very good, it will be 0. बहुत clear है यहाँ पे. जब तुम V cross B करोगे, ठीक है? V cross B करोगे तो V B sin theta. Theta कितना आएगा? V और B. देखो B B इस डायरेक्शन में, B B इस डायरेक्शन में. That means angle between them is 0 degree. Dot L. तो ये पूरा साइन 0 is 0, तो 0 डॉट L will be 0 वेक्टर, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ will be 0 in this case। चलो एक केस और लेंगे, एक केस और लेंगे, वो है ये आया B, we have magnetic field B, in this case there is a rod of length L which is being moved in this direction with velocity v. Now find out the induced EMF using the generalized expression. Find out the induced EMF using the generalized expression. Hurry up. Again Aman says 0, Sonu says 0. Aman, why 0? Aman, why 0? Anish also says again 0. Sakshi also says 0. Anybody give me state the reason why it is 0? Why 0? Why 0? Why 0? Quick, state the reason please. State the reason why 0. फिर से 0 है, मान लिया, क्यों 0 है? Why it is 0? Between V cross B and L is 90. Angle between V cross B and L is 90. Yes, very good. Angle between V cross B and L is 90. क्योंकि V cross B अपन आ गए, ठीक है? V ठीक cross B, तो L किधर आ रहा है? L is going, sorry, V cross B किधर आ रहा है? अंदर की, इनसाइड की ओर आ रहा है, ठीक है? तो V cross B आया अंदर, L cross B है, L है ऊपर, तो when V cross B dot L you will take, it will be cos of 90, which is 0, which is 0. Very good, Armi, Sakshi and Aman, ठीक है? तो that means यहां से एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एक स्टार्ट पॉइंट आता है जो कि तुमको ट्रिक की तरीके यूज करना है, that is amongst, ध्यान से देख लो, अब इतना लंबा नहीं देखना पड़ेगा तुमको, amongst वेक्टर V B and L,
if any two are parallel, then induced E.M.F is 0। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, कोई भी दो का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0। जैसे कि पिछले केस में लिखा था, तो वेलोसिटी वेक्टर v और मैग्नेटिक फील्ड b उन दोनों का सेम डायरेक्शन था वेलोसिटी वेक्टर v, लास्ट केस में वेलोसिटी वेक्टर v और मैग्नेटिक फील्ड b का सेम डायरेक्शन था। अभी देखोगे तो लेंथ वेक्टर l, वेलोसिटी वेक्टर v, इन दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो अगर इन दोनों तीनों वेक्टर्स में कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है, दैट मींस directly you can write, you can state that induced EMF will be 0। Okay, is it clear to all of you? Is this topic of motional EMF clear to all of you? अभी थोड़ा सा और कुछ करना है बाकी है इसमें। anyhow, is this part up till here very much clear to all the students? यहाँ तक clear है? Yes? Is it clear up till this place? Okay. So that's all for today. With this, we'll end up. Thank you very much. Enjoy your day. Have a nice day. Stay safe. Stay home. Take care and say Bharat Mata ki Jai. Thank you.